किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित Hare Krishna, भगवत कथा अनुरागी I welcome all the lovers of Bhagvatam Katha, all the devotees and attendees. को परम I सुशोभित especially welcome हमारे the senior devotees of कृष्ण भावना International Society of Krishna Consciousness who इस्कॉन have specially decorated this assembly. दूर दूर से I also देश would विदेश like से to welcome you all फेसबुक who और have यूट्यूब gathered के माध्यम से through the medium of इस YouTube, कथा को Facebook, श्रवण etc., करने वाले from all around समस्त the world, श्रोतागण एवं and in बड़े particular, भाव और प्रेम से I would welcome ये सुंदर भागवत the कथा का आयोजन करने organizers who वाले have, with अमेरिका mellows निवासी of love न्यू and जर्सी devotion, निवासी organized this Ram समस्त Katha, प्रजापति the परिवार Prajapati family from New जिनमें Jersey, जिनके स्वजन पितृगण and श्री whose मणिलाल जी beloved ancestors छगन are भाई Sri Lal ji, भाभी Chagan माता Bhai, Babi Mata, और जिन्होंने भरपूर भाव से who have with इस their कथा का heart आयोजन किया, filled with जैसे mellows, हमारे बलदेव भाई Baldev Bhai, और धर्मिष्ठा माता Dharmishta Mata, भारत से प्रकाश and पूर्व from India, Bharat, उनका Prakash, सुपुत्र रियान, their son Ryan. आप सभी भक्तों का I श्री राम कथा welcome के you all तृतीय दिवस on में the third day of this Ram पुनः एक Katha. बार हार्दिक स्वागत। I welcome you all once आप again सबके and चरणों में our humble obeisances at your lotus feet. राधे श्याम। Radhe Shyam. अब मेरा गला कुछ ऐसा बैठा है कि ऊपर My का सुर नहीं पकड़ा जा रहा है। throat is तो so आज much की कथा infected केवल that नीचे के सुर से I होगी, am not able मतलब to गले के सुर raise को my अगर voice. डाउन करके आपको कहूँ So तो नीचे वाला सुर ठीक है, we लेकिन will ऊपर be वाला सुर speaking स्पेशली on the lower आपको pitch. जगाने के लिए काम में आता है। ऐसे The higher pitch is usually आपको to झटका wake you देने के up लिए ऊपर वाले सुर मुझे लगता है बहुत and to थक गए surprise हैं you. ना, So इसलिए it ऊपर वाला seems सुर that नहीं I पकड़ have रहे हैं। given too तो much आज of केवल नीचे के सुर से कथा surprises याद that करिएगा, it has साथ worked यही up. है कि So ध्यान से कथा सुनिएगा please listen और carefully ज्यादा तेज और ऊंचा नहीं बोल because I पाएंगे, won't be able to speak लेकिन loudly बोलेंगे today. जरूर। But surely I will speak. श्री व्यास मुनि को पूछा गया Sri Vedyas Muni कि was मनुष्य और asked, पशुओं में क्या अंतर है, what is the difference ठीक है। between humans and और यही animals? प्रश्न हमारे गुरुदेव And the हमारे similar वृंदावन का question कोना परम पूज्य of our राधा गोविंद गोस्वामी Gurudev, महाराज के His जो divine, शिक्षा गुरु हुआ करते थे, His Holiness, गीता वाटिका के
के प्रमुख हुआ करते थे, आज जो गीता Sri Radha Govind Maharaj. फेमस है, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, So his उन्होंने Shiksha कभी अपने Guru को गुरु was स्वीकार नहीं किया, Hanuman कभी Ji शिष्य नहीं Poddar, बताया, इसलिए उनका नाम ही हो गया भाई, भाई श्री। and he never accepted anyone So as यही his प्रश्न disciple. भाई श्री हनुमान प्रसाद So पोद्दार को भी पूछा गया था the similar question was कि asked to मनुष्य और Bhai पशु में Hanuman क्या Das अंतर है, Poddar, that what is the difference between human और beings and दोनों धर्म animals, समान, and they both have चाहे similar भागवत की बात views. करूं या महाभागवत की बात करूं, If we उन्होंने यही speak कहा, about Bhagvat or Mahabharat, मनुष्य the और जीव person, में they both वैसे तो said सब that कुछ समान है, there is everything similar परंतु between एक human beings अंतर and है, animals, but there वो is है one difference. धर्मो ही एको अधिको विशेष। मनुष्य खाता है, पशु खाता है, मनुष्य सोता So है, पशु सोता है, they both मनुष्य बच्चे पैदा eat, करता है तो पशु भी sleep, बच्चे पैदा करता है, and reproduce. मनुष्य डरता है, पशु भी डरता है, सब कुछ सिमिलर, Both get लेकिन एक scared. वस्तु का अंतर है, Everything is similar, but there is और one वो है difference. धर्मो ही एको अधिको विशेष। मनुष्य जो है वो That धर्म the का पालन कर human सकता है, can follow the पशु principles of पक्षी dharma, धर्म का पालन नहीं कर सकते। while the animals and तो इसका अर्थ the क्या है? birds धर्मेण cannot. विहीन पशुभेर समानाम, बिना धर्म वाला मनुष्य So what does it पशुओं के signify? समान है। It means that a person who मनुष्य does के not जीवन से धर्म को माइनस कर दो follows the principles तो of मनुष्य dharma नहीं रहता, is equivalent to an वो पशु animal. हो जाता है। He is no सो कंक्लूजन ये better है than a कि animal. मनुष्य So the जीवन को conclusion is that धर्म का this पालन human करना life है, has been awarded to क्योंकि us भोजन पानी तो so that पशुओं के we शरीर में भी can हो जाता है, follow खाना the पीना सोना principles of बच्चे पैदा करना righteousness or वो पशु dharma. पक्षियों के जीवन में हो जाता है, लेकिन धर्म का पालन ये अन्य किसी भी शरीर में किसी भी योनि में नहीं हो सकता, So एक the और मात्र एक path of dharma or मनुष्य शरीर में ही self-righteousness पॉसिबल है। is only possible through इसलिए this human प्रत्येक body. मनुष्य का धर्म है, That is कर्तव्य है why every कि वो human धर्म being का पालन करे। is responsible to follow the जब path बात of धर्म की आती है righteousness or dharma. तो धर्म भी दो प्रकार के हो जाते हैं, मूल So रूप से there are fundamentally एक there are होता two है types of आत्मा का dharmas. धर्म और One एक is होता है towards शरीर the का धर्म। soul and the other is आत्मा towards the का धर्म body. श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सूत जी ने कहा, सभी So Sud पुरुषार्थ को Goswami धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज। आत्मा tells का in धर्म है the opening of परमात्मा की Bhagavatam सेवा that करना, परमात्मा the की भक्ति करना, responsibility of the soul जो आप सब is लोग कर to रहे हैं। perform devotional service towards the लेकिन Lord. क्योंकि हम सब संसारी But हैं, as we are all in this गृहस्थ हैं, material world and we are इसलिए householders, आत्मा के so धर्म के साथ साथ हमें along दैहिक with धर्म, the शरीर के धर्म को भी निभाना है। responsibility towards the soul, सो we आत्मा should का धर्म है also परमात्मा की follow the सेवा, भक्ति responsibility करना, of the body लेकिन as well. सिमिलरली शरीर का भी धर्म होता है। तो शरीर का धर्म क्या है? So, what are the शरीर का धर्म principles of righteousness भी बदल जाएगा, towards क्योंकि the शरीर भी दो body? प्रकार के हैं, So, एक स्त्री that और also पुरुष, differs because है ना? the body तो is पुरुष also का of two धर्म कुछ अलग होता kinds, है, that is male and female. स्त्री का धर्म कुछ अलग होता है। So, they both have their own आजकल कुछ different पुरुष स्त्री के धर्म को righteousness. निभाने की इच्छा रख So, रहे हैं there are और some कुछ स्त्रियां पुरुष का धर्म men निभाना who चाहती हैं। want to follow the आप संसार principles को देखो तो of सही, womanhood स्त्रियां जो है ना आजकल and पैंट vice शर्ट पहनना versa. शुरू कर दिया है, So, और today पुरुषों ने the आजकल स्त्रियों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। women are देखने से wearing ऐसा लगता है कि स्त्री the पुरुष बनना चाहती है और पुरुष स्त्री बनना clothes चाहते of हैं। पुरुष men, अब कान में बाली पहनने लगे हैं, and नाक में ये, men वहां सब are जगह पर डालने have लगे हैं। started wearing देखिए सबके earrings, अपने अपने धर्म etc. का दायरा होता है, So बात everybody धर्म की है। have their तो own मनुष्य को धर्म का पालन principles करना है, that लेकिन should be स्त्रियों का followed. कुछ अलग धर्म
and they both should follow their respective dharma or righteousness, because the construction or the nature of, of men and women are different. So men are less. So the men and are less emotionally charged than women. So, so when a girl is unmarried, her responsibilities are different. But when she get married, then her responsibilities and principles they change, and gradually when she becomes a mother, then also it get changed. फिर उसमें पुरुष को पुरुष का, स्त्री को स्त्री का धर्म का पालन करना, और स्त्री में भी जवान लड़की को कुछ अलग, बूढ़े माता को अलग, और जिसका विवाह हुआ है उस पत्नी के लिए जो धर्म है वो एक अलग धर्म है। और रामायण के जिस मोड़ पर हम लोग आए हैं, and here we are in the Aranya of Ramayana, where Ram, Lakshman and Sita ji are in the hermitage of Atri Muni and Anasuya Mata. So Ramji and Lakshmanji are sitting with Atri Muni while Sita ji is sitting with Anasuya Mata. And especially Anasuya Mata is telling about the responsibilities or principles for womanhood. And in particular, she talks about the responsibilities or principles that should be followed by the married women, which we have heard yesterday. After listening that, the women who are principled or pativrat, they can challenge that this was told to Sita ji. Why should we bother? We should live the way we want to live. Because this is almost 11 lakh years before. It is not applicable to us. But the clarification is given by Goswami Tulsidas here. So this is what Ansuya Mata is telling Sita ji. Listen Sita, suno Sita means listen Sita. She says that if somebody just remembers your name, then the women of this material world will become purified. Your name itself purifies. Yet I have told you this. Why? The pastime that I have told you is for the welfare of this world. It's not for the welfare of Sita Mata, because by just remembering her name, we can get purified. But the responsibility or principles of womanhood, we should not ignore them, saying that they don't apply to us. Actually, they are applicable to us, and here is the proof that this is for the welfare of the people of this material world, Sansar Hit. So, Sita ji said that you need not to tell me this because I don't like this, because even I'm an ordinary woman of this material world. So I cannot ask you
लेकिन सीता जी ने जब ये स्त्री But धर्म when और Sita ईश्वर ji की भक्ति heard के धर्म की this, कथा सुनी the तो सीता जी को principles of कैसा लगा? for womanhood, what did Sita ji, सुनु in which way जानकी Rita ji परम सुख reacted? पावा। What did she say? जानकी जी So ने here जब it ये is स्त्री mentioned धर्म that की कथा सुनी, when she पति heard धर्म this, थोड़ा कठोर था, although कड़क it धर्म is है, tough लेकिन to सुनो follow, जानकी, yet जानकी ने सुनकर परम after सुख listening to पावा। that, Janki ji हुआ was extremely happy. और सादरता सुचरण शिशु नावा, और आदर के साथ, And with respect, आदर के साथ जानकी जी ने she bowed down अनसुया her माता के चरणों में head प्रणाम किया। on the feet of Anasuya इस Mata. दुनिया में In this world, हमारे बारे में सत्य बताने वाले बहुत कम है। the people who reveal the truth दुनिया to में us जहाँ are कहीं very जाओगे, rare. आपको Wherever we प्रशंसा go in करने this वाले material बहुत world, मिलेंगे। we will get प्रभु आप people who will महान हो, praise us ओ that, हो आप तो भक्त बन गए, ओ हो आप that तो you are a बहुत great महान devotee, तिलकधारी हैं, आप तो you बहुत are महान हैं, wearing बहुत प्रशंसा करने वाले मिलेंगे। tulsi beads, etc. And लेकिन हम क्या हैं, what is our हमारी actual स्थिति क्या है, position? ये What सत्य are बोलने वाले we? बहुत And कम where हैं। do we stand? They're very एक rare तो हमें people who reveal that सत्य to दर से us. परिचित कराने वाले एक तो ऑलरेडी कम है, So, और उसमें भी यदि although कोई हमें we have सत्य very few बताता है people who तो हमको tell अच्छा नहीं लगता, हम this, रूठ कर बैठ are जाते हैं, rare, and if हम someone चिढ़ा tells जाते हैं। us, then we ये get तो सच upset बोलने about it, वाले कम हैं और ऊपर से बेचारा कोई बताता है तो हम रूठ जाते हैं, या हम गुरु को ही छोड़ कर चले जाते हैं, ये तो and we कैसा just आदमी है। leave the Guru. लेकिन सीता जी से ये गुण But सीखने लायक है we should learn कि बहुत from Sita कठोर ji that और कड़क, कुछ कठोर बात भी थी, लेकिन ये although सब there was so सुनकर much सुनी धर्म tough की परम principles that सुख were पावा, shared, yet तो Janaki उनको ji बड़ा was आनंद हुआ extremely happy, और अनसुया माता के प्रति रिस्पेक्ट आदर and और बढ़ due गया, to her respect, which was elevated, और she bowed इसलिए down at her उनके चरणों feet. में बार बार प्रणाम किया। भक्तों, प्रशंसा करना बहुत आसान है, It is very यदि easy to दुनिया के लोग आपकी praise प्रशंसा करें ना, when ये people प्रशंसा, ये praise सस्ती you in प्रशंसा this material बहुत world, जगह पर मिल then जाएगी, it is लेकिन very अपनी cheap and वास्तविक easily स्थिति का achievable. अनुभव कराने But वाला the actual कोई position है, where we कोई stand, बिरला ही आपको मिलेगा। only a rare person ये will सब में reveal ताकत that to नहीं होगी us. सत्य बोलने की, Not लेकिन everybody कोई is व्यक्ति inclined to ऐसा speak the कोई ही truth. होगा जो हमें Only हमारी a वास्तविक स्थिति से great जोड़ेगा। bona fide spiritual master can मैं आप reveal सबको कहूँ, हम to मैं us आपके our साथ actual हूँ, position. जीवन में कोई ऐसा आदमी मिले And जो if we हमें हमारी get वास्तविक स्थिति someone से परिचित who कराए, introduces तो us to उसके our साथ actual झगड़ा मत position, कीजिएगा, then we should not उससे fight झगड़ा मत with them. करना, And we उससे should not दुश्मनी leave them. कीजिएगा, We should उसके चरणों respect में them. प्रणाम कीजिएगा We should और bow उसके down साथ at their ऐसा lotus आचरण feet. कीजिएगा And we should कि behave in भविष्य में such a जीवन manner में that यदि हमारे in अंदर कोई future, गलती हो if तो there वो is a प्रेम से fault in हमको us, बताए, वो then हमको he बताने tells में us with love. And he झिझक should not मतलब hesitate वो अटके नहीं, वो आसानी से हमको before बता revealing सके that to कि us. ऐसा आचरण It हमें should be अच्छा made नहीं लगता। easier for him to say by क्योंकि अभी creating क्या है ना, such धीरे धीरे environment. जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, As we are हमारे डिवोटी समाज में, भक्त समाज approaching में भी the Kali सत्य Yuga, सुनने की ताकत बहुत कम हो रही है। and even भक्त in the शिष्य भी world of अपने गुरु से devotees, सत्य सुनना नहीं चाहते हैं, the tolerance of और listening the बेचारे truth गुरु is सत्य becoming सुनाए तो वो सत्य सुनने की very ताकत भी शिष्यों में कहाँ है, less. छोड़कर ही चले जाएंगे। And even the disciples लेकिन leave सुनिए, their bona मैं fide spiritual जानकी जी के master. चरणों में प्रणाम करूं So कि हे माँ, I bow down आप at the हम lotus सबको feet of प्रदान Sita करो ji that कि even हम we सत्य get सुनने की such ताकत रख सके, potency and power हम that we are सत्य को able धारण to कर सके, listen और to हमें the सत्य truth, सुनाने वाला and कोई we can सदगुरु मिले, speak the truth, and we और हम get a उसको सुन Sadguru सके। who इस reveals us प्रकार the से truth, and सीता जी that को we मैंने can प्रणाम किया। digest that truth as well. श्री जानकी जी सती शिरोमणि है, Sri Janaki सती ji के is the शिरोमणि होकर भी epitome
or the crest jewel of all the women. She not only heard, but she also bowed down at the feet of Anasuya Mata. That reveals that she has not an iota of pride in her. कथा सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है. It's just important to listen to the pastimes. We should listen to the pastimes, but we should bow down to the feet of the person from whom we are listening. I'm not, you should not bow down at my feet, but here is the principle that I am sharing. That we got the prem happy. यहाँ तक नहीं चलेगा. आगे क्या है? सादर तासु चरण शीस नावा, जिनसे हम भक्ति When we वैराग्य सीखते हैं, get love, devotion, and austerity from someone, then we should bow down at their lotus feet, because we will get their blessings and mercy through the dust of their lotus feet. तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन जाना. तब राम जी ने कहा कि मुनिवर, Then Ramji said, "Oh Munivar, please give us permission to leave." भगवान राम जी ने प्रणाम किया. Lord Sri Ram bowed down, करने का जब निवेदन किया, and when he requested to leave, तब अत्रि ऋषि गदगद हो गए और गदगद स्वर से कहने लगे. and Atri Muni was overwhelmed with emotions, and with his shivering voice he said, मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजे हूँ, जनी ने हूँ. राम जी के शब्द तो आप देखिए. when Ramji said that, कि हे अत्रि ऋषि, "Oh Atri Muni, निरंतर आप कृपा करते रहिए. please bless us immensely and constantly, and please consider me as your servant, and please always keep your loving eyes on me." भगवान राम तो धर्म धुरंधर है. सो धर्म धुरंधर राम जी की वाणी को Ramji is epitome of righteousness, and listening this from him, Atri Muni said, filled with love and जब राम emotion, जी ने कहा कि मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा, मुझ पर अपना प्रेम बनाए रखिएगा. देखिए राम जी धर्म की स्थापना करने आए हैं. Ramji came to establish the principles of righteousness or dharma, देश से नहीं कर रहे हैं, and he is not doing it by preaching but by practicing. People like me, we try to establish the dharma or righteousness by preaching, but it should be done by practicing. And what a beautiful nature or behavior is that he is telling the sadhu that please always remember me as your servant. अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखना. राम जी ने ये आचरण सिखाया. This is what he taught us. And listening this, Atri Muni, overwhelmed with emotions, he said, "Oh Lord, what are you saying? You yourself are the Supreme Personality of Godhead, and you are asking this blessings from me?" कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमार्थ बादी, ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे. अरे जिनकी लेश मात्र कृपा से शिव सनकादिक, just little mercy of a person थोड़ा बहुत परमार्थ of the Supreme Personality of Godhead, ये बड़े बड़े लोग by जिनकी कृपा which से पूरे जगत को even the huge personalities like Shiva, Narad, and Sankadik are running this material world, such Lord who is benefactor of all is asking for my boons and blessings. कि अब मैं So Ramji said that please give me permission to leave
when Ramji asks for the permission, Atri Muni replies, प्रभु मैं आपको ऐसा he कैसे says कहूं that, कि how आप जाओ should यहाँ I से? say that you should अब राम leave जी आज्ञा now? मांग रहे हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं Ramji is बढ़ूं asking और for the आगे बढ़ूं। permission that I want to proceed लेकिन further अति in ऋषि the धर्म संकट में forest, यही विधि कहो but जाओ। Atri Muni हे स्वामी, हे प्रभु, is मैं किस प्रकार से आपको on the कहूं कि आप यहाँ crossroads. से चले जाओ? He that how should I say गुरुनाथ that now तुम you should हंत leave or you may leave? गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज Guru Maharaj, Radha Govind Maharaj, कई घंटों भर बैठकर हमें ये सब पढ़ाते थे ना। he used to जैसे sit with us for hours भारतेंदु and teach us, हरिश्चंद्र जी के पद को प्रस्तुत and he करते used to थे। quote the भारतेंदु Hartendu हरिश्चंद्र Harishchandra रसिक संत हुए, quote, बड़ी who रसिक was a भावना mellow, उन्होंने इन ग्रंथों full पर शास्त्रों पर devotee, की है। and he had revealed किस so पद many पर पहले कौन commentaries से and पॉइंट interpretations. समझिए। So on this राम जी point, कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब यहाँ से चलूं। so Ramji is asking और for the अत्रि ऋषि permission to कहते हैं leave, कि मैं आपको कैसे while आज्ञा Atri दूं? Muni is saying that मैं how can आज्ञा I देने वाला give कौन you हो सकता permission? हूँ? Who am I to permit तो you? यहाँ पर So here, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का Bharatendu Harishchandra बहुत ji, सुंदर his verse ये चार लाइन में is चार in पंक्ति the में top वे कहते हैं screen. मनो भगवान गोपियों से He विदा says मांग that रहे हैं। if हे the Lord गोपियों अब asks for the मुझे permission मुझे from जाना है, मुझे the आज्ञा gopis दीजिए। or the तो denizens of गोपियाँ कहती Vraja है that कि I should माँ leave, गा and इति अपि the मंगलम। gopis say that, कृष्ण आप हमें "Oh ऐसा कह रहे हो कि Krishna, हमको आज्ञा दो कि हम you are जाएं। asking our तो permission कृष्ण to हम leave." आपको ऐसा कहे कि माँ गा मत जाओ। If we say that please गा माने don't समझ leave, रखना, माँ माने नहीं। ma means कृष्ण यदि हम आपको कहे कि आप मत no जाओ and ga means तब तो gamant or to अमंगल हो go. जाएगा। And if we tell you this, माँ then गा अपि it will अमंगलम। be हम आपको inauspicious. रोकेगी कि माँ जाओ मत जाओ तो ये अमंगल होगा। और ब्रज सखे स्नेहहीनम, और ब्रज हम ऐसा कहे दूसरी लाइन में If I tell you that okay, you may leave, तो ये तो प्रेम की शून्यता हो जाएगी। then it will मत be जाओ ऐसा कहने the से अमंगल हो जाएगा। voidness आप or चले जाओ ऐसा कहने nullness से in प्रेम घट love. जाएगा। Our love वो towards you will स्वरूप get जिनके reduced प्रभुता, और यदि or हम आपको diminished. आज्ञा दे के नहीं नहीं आपको नहीं And जाना if है, we आपको permit यहीं पर रहना है, that तब तो हम you should स्वामी not leave, और आप दास हो जाओगे, and मॉडल if के we say स्वामी हो that you have जाओगे। to stay here, then we will become your गाय का दूध पिया है तो ये थोड़ा समझ में आएगा। तो कहती है master rather than being प्रभुता, servitor. यदि हम कहे कि आप रुक जाओ तब तो ये एक आज्ञा हो जाएगी। और अंत में कहती Then it will be a command. And lastly, they say कृष्ण यदि हम ऐसा कहे कि कृष्ण आपके that मन में जैसा हो वैसा if we करो, say तो that you do उदासीनता as बनी you रहेगी। desire, तो then फिर it किसी भी प्रकार का न मूड न कोई will भाव be नहीं होगा। devoid of emotion and mellows. तो कृष्ण हम तो धर्म संकट में फंस गई। So आपने हमें कहा we are on कि the मुझको आज्ञा दो, तो हम crossroads बोले तो क्या बोले? that what गोपियां should we बिल्कुल speak? अवाक रह गई। यहाँ Gopis अत्रि ऋषि भी were बिल्कुल चुपचाप हो गए, completely mute सुन्न पड़ गए and कि भगवान numb घर पर आए हैं। that the और Lord घर is पर आए here. हुए भगवान कहे कि अब मुझे आज्ञा And दीजिए, मुझे Atri जाना Muni है। is also in the similar फिर से वही situation that श्लोक में कहूं the Lord is कि माँ गा asking इति for मंगलम, permission to मत जाओ leave. ऐसा कहने से अमंगल हो जाएगा। So if he और says जाओ that don't आप go, चले जाओ then ऐसा it will be कहने से प्रेम में inauspicious. शून्यता हो If जाएगी, प्रेम if नहीं he होगा। says that you may और leave, ठहरो, then that will be आप रुक जाओ the यहाँ पर, ऐसा devoid कहने से of love. जबरदस्ती यानी कि And प्रभुता हो जाएगी। if I और प्रभु आपके मन में tell जैसा you हो ऐसा to करो, ऐसा command कहने से or to उदासीनता हो remain there, जाएगी। then that would be a ये तो command, and I will be your पूर्ण धर्म master. संकट है। And if I यही tell you बात do whatever ये or you wish अत्रि or ऋषि भी कहते desire, हैं then that कि will ही be विधि कहो devoid of जाओ। हे emotion. स्वामी, हे That is प्रभु, why Atri मैं Muni आपको is saying कैसे that कहूं कि आप how चले should जाओ। I tell you to leave? करहु नाथ तुम अंतर्यामी, हे नाथ आप तो अंतर्यामी
you आप तो सब कुछ करने में समर्थ are हो। the knower of everything अस and you're कहि प्रभु capable कबीर of doing मुनि or धीरा, achieving everything. लोचन जल बह पुलक शरीरा। ये साधु ये ऋषि मुनि अपने बाप के नहीं होते हैं, इसका These कोई नहीं होता, ये munis छक्कड़ वैरागी होते हैं। are आज प्रभु रामचंद्र जब इनके totally घर से जा detached, रहे हैं but yet तो इनकी when दया Lord दृष्टि Sri लगी Ram is और इनकी leaving, आंखों से जार जार his जार जार अश्रु की धारा बहने लगी patience is also leaving and he is और रोते हुए यही weeping कहने लगे, vehemently. प्रभु And करोड़ों while करोड़ों weeping, जन्म he तक says that साधना करने पर भी जिस after भगवान की प्राप्ति millions नहीं and होती, billions years ऐसा of ईश्वर austerity, आज we चलते are हुए not हमारे able बीच to achieve the मैं Lord. धन्य And हो yet, गया प्रभु, I got मैं this कृतार्थ हो गया, opportunity that you came to my मेरे जीवन door, का कल्याण हो and गया। now I am गोस्वामी जी eternally बहुत सुंदर grateful. कहते हैं, Goswami ji कली writes मल सुमन beautifully. दमन मन सुख मूल सुजस। भगवान का यश जो है, He says that भगवान रामचंद्र the की ये fame कथा, of the भगवान Lord, रामचंद्र की ये लीला कैसी है, तो एक कलिमल दमन, so the कलयुग के quality मल is का दमन करने Kalimul वाली, सहन Daman. करने That वाली, means that it can कलयुग के remove मल को all the सहन करने वाली impurities of और this कलयुग age के of मन को quarrel and hypocrisy, that कंट्रोल is Kal करने वाली। Yuga, and it can help in भगवान controlling रामचंद्र our की कथा mind कैसी है, and heart. कलयुग के मल को खत्म करने वाली, It will purify कलयुग के our heart मन को कंट्रोल करने वाली and it will control और सुख मूल our सभी mind, प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली। and it provides इसलिए all सादर kinds of सुन ही इस happiness. राम कथा को आदर के So साथ सुनना we चाहिए should all listen और यदि to कोई it इस with कथा को complete आदर से respect. सुने And if somebody listens with तो complete राम वह ही respect, अनुकूल, then तो उस भक्त के लिए भगवान Lord रामचंद्र Ram is अनुकूल always है। favorable to them. आगे कहते हैं, Further, he adds, कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग न जप। वर्तमान जो समय चल रहा है, he says, the कलयुग, present Kali Yuga, ये कलयुग कैसा है, कठिन, how is it? Kathin, that ये is कलिकाल difficult. कठिन काल है So this is a और इस difficult कठिन काल time, में and in this time मलकोस धर्म, इस कठिन of काल में धर्म extreme न, difficulty, ज्ञान न, जप जोग न, इस कलयुग में न योग हो सकता है, न so ज्ञान there हो is no सकता है scope of और न तो इतना doing बड़ा धर्म का पालन हो yoga सकता है। or इस कलयुग में following धर्म है dharma क्या है, or by knowledge. परिहरि The सकल only भरोसा, thing that you दुनिया can के do सभी is लोगों से भरोसा छोड़कर leave राम ही भज everybody ही, and राम don't trust भजन anybody करना and just चतुर है। chant the holy names of Lord वो Sri मन Ram. चतुर है, वो And मन that is the बुद्धिमान है, sign of वो सभी intelligence भरोसों को in छोड़कर human being. राम जी का भजन करता है। इस प्रकार से So in this अत्रि manner, ऋषि से आज्ञा लेकर taking राम the लक्ष्मण permission और to leave जानकी from इस Atri वन Muni, के मार्ग से Ram, आगे Lakshman बढ़े। and Janaki, they move वन forward के मार्ग से चलते हुए आइए अब towards the भजन के मार्ग forest. में आगे बढ़े। So let's move तो वन के मार्ग से आगे बढ़ते हुए further through the forest. मार्ग में एक राक्षस मिला, जिस They राक्षस का नाम met था a विराट, demon whose name was Virad, और विराट राक्षस के साथ मुठभेड़ हुई। and they भगवान had रामचंद्र ने a उस conflict राक्षस का with वध him. किया। राम जी का बाण Ramchandra जैसे killed ही उस him, राक्षस को and लगा, as राक्षस his चतुर्भुज रूप boat धारण कर लिया, touched this demon, शंख चक्र गदा he पद्म पीतांबर got the धारण। form, राम the जी ने देखा forearmed कि ये बेचारा दुखी है, form of the Lord, उस राक्षस को दुखी and he देखकर saw प्रभु that रामचंद्र ने he was अपने प्रेमी unhappy, धाम साकेत and वैकुंठ में भेज दिया। Lord Sri Ram sent him to उस विराट Saket राक्षस का उद्धार किया। and liberated this Virad धीरे demon. धीरे धीरे उस वन मार्ग में आगे बढ़े Further, they तो मार्ग में proceeded शरभंग नाम का in the एक deep व्यक्ति मिला। forest. ये शरभंग
And there was a rishi whose name was Sharbhang, whose past is that he was very capable and he was going to the Brahmaloka, the abode of Brahmaji, and he heard that Ramji has taken birth and during his exile he is about to visit us. So Sharbhang Rishi cancelled his plan to go to Brahmaloka. He came back and he was waiting for Lord Sri Ram. And when Lord Sri Ram came and he saw him, he was pacified and he requested Lord Sri Ram that, "O Lord, you should live here with us till the point I don't leave my body." Similar to Bhishma Pitama, he said that I have in my life performed yoga, yajnas, austerities, etc. And I offer all these to your lotus feet. And when Lord Sri Ram, heard this, he gave the pure devotional service towards him. And he got the opportune time by seeing Lord himself. And Sharbhang Muni left his body by generating the heat inside his body, and he went to the eternal abode of the Lord. So it was a beautiful death. After that, Ramji started moving further in this Aranya forest, and there was one place in where which Ramji saw, and this place was filled with bones. And seeing this, Ramji was extremely disturbed, and sages came to meet him, and he asked that why this place is filled with so many bones. And he was answered that there are quite a few demons who stay here and they kill the sages and saints, and these all are the bones of great sages and saints and hermits who were killed by the demons. Listening this, Ramji couldn't control his anger and he took a vow. न कराऊं मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। राम जी अपने दोनों हाथ उठाकर Ramji took the vow by raising his hands. He took the first vow, that is, that I will make this earth devoid of the demons in this 1 year that is left. There not be any demon in this material world or this earth. I will make this earth devoid of the demons. And the second vow that he took was, and in this 1 year, I will visit the hermits and hermitage of all
these saints and sages and will provide them eternal happiness. So, in this manner, he took the vows and he started visiting the sages and saints one by one. And in his way, he met Sutikshanji. Sutikshan, who was a great devotee of Lord Sri Ram. And Ramji gave the benediction of pure devotional service towards him to Sutikshana, and Sutikshan said, O Lord, I pray that you have given me your darshan, but please give an same opportunity to my bona fide spiritual master that you have done welfare of me. My guru always just does the preaching, so please come with me and give darshan to them. This is how a disciple should be. So Sutikshanji took him to his bona fide spiritual master, and his guru was Agast Muni or Kumbhaj Rishi. So Ramji reached the hermitage of Agastya Muni or Kumbhaj Muni, and when he saw him, he welcomed him beautifully and venerated him. And for one day, Ram, Lakshman, and Sita ji, they stayed at the hermitage of Agastya Muni, who is also called Kumbhaj Muni. And the next day, Ramji requested that, "Oh, Agastya Muni, please give me one mantra by which I can kill all the demons." Because he has taken the vow of some time back. So Ramji is anxious to meet his target, and so he asks a mantra to kill the demons. I'm telling you this, that the bow that Agastya Muni gave to Lord Sri Ram, and by this bow Ravan will be killed, as mentioned in Ramayana by Valmiki ji. Ramji was unable to kill him, but when Ramji remembers the mantra which Agastya Muni came and he gave the bow, and when he used that bow and the arrow, then Ravana was killed. So this is the foundation where it started. So Ramji said that this is my last year of exile, and I want to kill the demons to follow the principle of my incarnation. Agasmuni said that, what are you saying? The Lord who's just eyes all this material world and universes work. So, and for killing such small demons, you are asking me the mantra, and as you are commanding me to do the same, so I give you this arrow and the mantra, and I request you that you should not go further. You go to Dandakaranya Van or forest, and on the banks of Godavari river, which is the place called Panchavati. So he's giving him the arrow, and he gave the path also to kill
Ravana. नहीं कहा कि भाई मेरे गुरु ने मुझे कहा Prabhupada said अमेरिका that जाकर प्रचार my करना, guru told तो me अभी that मुझे समझ you में नहीं should आया कि मैं go यहाँ to क्यों US आया and हूँ। preach. Initially, I मेरे couldn't गुरु ने तो understand भेजा है, why I'm here. कुछ तो होगा। He said, but तो यहाँ as पर he has said, there जब might be something. अगस्त्य ऋषि So, ने in कहा the same manner, कि दंडकारण्य में गोदावरी के Agast तट पर Muni is पंचवटी नाम का telling स्थान है। Ramji to proceed towards Panchavati. राघव, And महात्मा oh होने Raghav, से आज उस वन में वसंत ऋतु नहीं आती है, और वसंत and ऋतु नहीं आने से as पंचवटी के सारे वृक्ष शुष्क हो चुके हैं, Panchavati सारे never वृक्ष सूख गए faces हैं, the rainy season, वो so वन all the trees are निर्जन हो dried चुका up है। and इसलिए it is कृपया करके becoming आप barren. अपने पुनीत So, चरण उस if वन you में पधराइए और उस keep शाप को your दूर कीजिए lotus और feet वसंत there, को then प्रगटाइए। that कृपया करके curse आप will be सीधे removed पंचवटी में प्रस्थान कीजिए। and the Panchavati will राम, bloom लक्ष्मण again. और सीता So Ram, Lakshman and पूर्वज Sita ऋषि ji अगस्त्य ऋषि से प्रणाम करके आशीर्वाद bow लेकर वहां से down चलते and हैं, took the blessings of पंचवटी Kumbhachar के Agastya मार्ग पर Muni रहे हैं। towards, लेकिन and they पंचवटी start की ओर moving जाते towards हुए Panchavati. And मार्ग while में going towards गीधराज Panchavati, जटायु से भेंट होती है। they meet Jatayu. गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई, रहे परन गृह छाई। गीधराज से भेंट भई, गीधराज जटायु से भेंट हुई। So he met Jatayu and they befriended him दशरथ जी के साथ जटायु का जो मिलन आदि हुआ था वो सब याद and they किया। discussed the meeting of Jatayu with Dashrath ji. राम जी गोदावरी And तीर after पहुंचे meeting हैं। him, he पंचवटी reached the स्थल पर banks of पहुंचे हैं। Godavari, the place पंचवटी में क्या that is किया? परण Panchavati. गृह And छाई। what did he do पंचवटी there? में परण, परण माने पत्ते की, He made पर्ण कुटी बनाई। a पर्ण से hermitage with पत्तों से leaves. अपनी Paran कुटिया means बनाई। leaves. सो परण गृह छाई मतलब दो कुटिया बनाई, एक कुटिया में राम और सीता जी So रहे they made और दूसरी एक two थोड़ी सी दूर hermitages, छोटी सी कुटिया one वो for दशरथ जी Ramji के and लिए बनाई। Sita ji and the other one for Lakshman ji, little और distant from अब each तक other. पंचवटी में वसंत ऋतु नहीं आती थी, So till now, पंचवटी में वसंत they ऋतु never had चली ही गई थी, rainy season उत्पन्न ही here नहीं होती थी। लेकिन राम or जी के Basant Ritu. But पंचवटी में चरण when रखने से, he राम kept लक्ष्मण और his सीता feet के in साथ रहने से Panchvati, आज यहाँ पर वसंत ऋतु आ गई, the और वसंत ऋतु के कारण वृक्ष spring नए season फूल खिलने लगे, गोदावरी का bloomed जल बहने and लगा। all the trees started blooming with fruits and flowers. मुझे आपसे आचार्यों ने इस पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत दिया है। The Acharyas have given a very beautiful पंचवटी interpretation for क्या this. है? What is पंचवटी तो Panchvati? पंचवटी है, महाराष्ट्र में जाओगे तो मिलेगा, This is the place called Panchvati in Maharashtra, that is true, हमारा but शरीर भी पंचवटी है, even our body है ना? signifies or हमारा denotes शरीर भी Panchvati पंचवटी है, क्योंकि पांच तत्वों से ये शरीर because बना है। this body is पृथ्वी, formed जल, by अग्नि, वायु, the आकाश। three or by the five elements. जैसे उस पंचवटी में As वसंत that नहीं आने Panchvati से उज्जड़ हो चुकी थी, is become ऐसे barren हमारी because पंचवटी of भी the बाहर से तो अच्छी devoid है, of spring season, लेकिन अंदर से similarly our उज्जड़ हो body, चुकी है। it may seem उस normal पंचवटी but में is वसंत नहीं आती barren, थी, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण सीता आए but as soon तो as वसंत आ गई, Ram, Lakshman and Sita पंचवटी ji entered, सुंदर हो गई। it हम भी started यदि blooming. चाहे And कि even हमारे if we पंच want तत्व की ये पंचवटी में that this वसंत ऋतु आ of जाए, body फले फूले, made of five हमें elements आनंद ही आनंद हो, should bloom and तो be हमें ecstatic, हमारी इस then पंचवटी में we राम should लक्ष्मण और सीता को पधराना चाहिए। we we should keep हमें भी हमारे Ram, जीवन Sita में ji and Lakshman राम ji लक्ष्मण in और our सीता का heart स्वागत करना and चाहिए। we should welcome them. आप कहोगे राम लक्ष्मण सीता का स्वागत कैसे?
So, how should we do that? Ramji signifies knowledge or gyan. Lakshmanji stands for austerity, and Sita ji is the epitome of pure devotional service towards the Lord, that is bhakti. And when by the mercy of them we will have knowledge, austerity, and pure devotional service towards the Lord, then our life will become filled with bliss. So, this Ram Katha is filled with principles and philosophies. When he started living in Panchvati, the forest was blooming, the time was passing, and once upon a time, or one fine day, the sister of Ravan, whose name was Surpanakha, so there are two things about her name. The first is her name was Surpanakha. Soup. Soup means the supra, that is with which we husk the grain, and who has nails, long nails. That is why she was called Shupnakha. Even sometimes women keep such nails. Guru Maharaj says that to kill which Hiranyakashipu, they are increasing their nails. And the other interpretation is Shurpanakha. Shurpanakha or Supnakha. These two are valid. And we'll use either of them. Shurpanakha is more prevalent. So Shurpanakha was the sister of Ravana. She came to Lord Sri Ram. There is one important thing about her that should be shared. Her husband was killed by Ravana. Although she was his sister, yet her husband was killed by Ravana and she was a widower. Oh, widow. Ramji was sitting with Sita ji alone, and Lakshmanji was sharpening his bows. So Lakshmanji was ready. Ramji and Sita ji are sitting in their hermitage or hut, and they saw that after seeing the beauty of Lord Sri Ram, she told him that I am the most beautiful woman in this world. And I have not seen anybody more beautiful than you. And after seeing you, that we should marry. So she straight away proposed Ramji that somehow
No matter what, I want to marry you, so you should marry जब इस me. प्रकार से शूर्पणखा ने कहा, In this manner, when राम जी क्या Shrupnakha said, कहते हैं ध्यान से what सुनना। does Ramji replied? Listen carefully. Here in front of your screen. राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम जी मनुष्य का Ramji is आचरण the कर रहे हैं। crest jewel आजकल of स्कूल कॉलेज में righteousness या किसी को इस प्रकार or का प्रस्ताव principles. मिले तो क्या करना चाहिए? So if ये राम जी somebody से gets a पूछो। proposal like this in the सबसे school or पहले college, then उन्होंने क्या how किया? should they react? सत ही Ramji चित is ही teaching कहे us. प्रभु बाता। सबसे पहले तो राम जी ने शूर्पणखा के सामने ही नहीं देखा। First of all, he शूर्पणखा तो never बड़ा बड़ा even looked प्रतिभागी है, at लेकिन राम जी Shrupnakha. ने शूर्पणखा के सामने नहीं देखा। राम जी तो सीता जी के सामने देख रहे हैं। He was looking at Sita तो ji पहला पॉइंट तो still. ये कि उनके सामने ही नहीं देखा। और कहि कुमार मोर लघु भ्राता, और राम जी ने शूर्पणखा को जो भी कहा वो तो मैं बाद में And कहूंगा, whatever he said, लेकिन I ये will tell you बहुत अच्छा later. पॉइंट है But this is a great कि point शूर्पणखा here के साथ जो भी बात that हुई राम जी की, whatever उसके they बाद नहीं talked, हुई। Ramji तो never एक at काम जो once है ना आंखों से प्रकाश looked करते हैं, at her. इसलिए The प्रत्येक स्त्री या पुरुष को चाहिए lust starts from our eyes. So काम को प्रवेश every ना दे। जब इस man or काम woman तो should आंखें को try पकड़ to लेना चाहिए, avoid to आंखें को see दृष्टि को in such a भक्ति situation. की ओर कर देना चाहिए। राम जी And ने शूर्पणखा के सामने नहीं we देखा, should look कारण ये towards bhakti. So what was the reason यदि राम जी Ramji never looked शूर्पणखा at के her? सामने देखते If he would तो have seen शूर्पणखा का अर्थ क्या Shupnakha, बनता है? ध्यान से सुनिएगा what does मेरी it बात को। mean? Just listen यदि carefully, कोई the प्रपोज principle करता or है philosophy. और If आप आंखों somebody से उनके proposes सामने देखो, इसका and अर्थ if ये you हुआ look at कि them, आपने that उनको means दृष्टि दे दी। that means that मतलब you या are तो आपने दृष्टि तो giving दे दी, them और कुछ दो your या न दो, आपने sight अपनी आंखें तो उनको दे दी। and you थोड़ा have उसको given your कंफर्मेशन मिल गया। sight to them, and there is दूसरा a राम जी little ने क्या देखा? confirmation. And the second reason why he राम didn't जी ने look at सोचा कि her, यदि मैं इस पर अपनी दृष्टि डालूंगा if I see तो her, मेरी आंखों की दृष्टि से then ये by my शूर्पणखा eyes जलकर भस्म हो जाएगी, she will be और burnt ये to यदि मर ashes. जाएगी तो And if मेरी she दया dies, का एक पात्र घट जाएगा। then there इसलिए will be उनकी one हत्या less कर दी। character in my pastime. तीसरा कारण, Then the third राम reason, जी ने शूर्पणखा के सामने नहीं, सीता जी के सामने he देखकर was looking towards शूर्पणखा Sita से ji बातचीत की। and इसका he talked दूसरा with कारण, her. The राम जी reason शूर्पणखा is को ये कहना चाहते कि he भाई मेरा wanted to विवाह हो tell चुका that है I'm और ये मेरी already पत्नी married है। and she is my मेरा और wife. मेरा विवाह हो चुका और ये मेरी पत्नी है। और राम जी ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। And इसका चौथा the कारण fourth reason कि हम why अपने he से never क्या looked, चाहते हैं because he कि wanted अपनी us to दृष्टि teach that यहाँ we वहाँ should बहुत नहीं keep डालनी our चाहिए, vision or sight अपनी नजर here यहाँ and वहाँ there. ज्यादा हमें We घुमानी should नहीं चाहिए, focus, क्योंकि साधना में, भक्ति में because दृष्टि for का performing बहुत the बड़ा रोल है। devotional service towards the दृष्टि life, का बहुत बड़ा प्रभाव है। devotional service towards the Lord, the sight is very, very सुनिए तो बहुत important सुंदर and कीर्तन है, significant. यदि गा पाऊंगा तो। हमने जहां में देखी किस्म किस्म की नजरें, हमने जहां भी देखी किस्म किस्म की नजरें, चकोर चांद जैसी हम टगर ढूंढते हैं, चकोर चांद जैसी हम टगर ढूंढते हैं। अरे दुनिया में हमने दृष्टि तो बहुत देखी, It is that I have seen चकोर की दृष्टि जो many चांद types पत्थर of की होती है, eyes, ऐसी दृष्टि हमने कहीं नहीं देखी। but I haven't seen the vision वो of चकोर Chakor बहुत towards देखती the है, moon. The कहाँ Chakor कहाँ gets देखती है, leaves his बस body केवल चांद को ही देखती just by seeing the moon. है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी दृष्टि सीता की ओर रखी और शूर्पणखा से बात करते हुए कहते हैं, And he told कई कुआर Shurpanakha, लघु भ्राता, देखो शूर्पणखे, मेरा तो "Oh विवाह हो Shurpanakha, चुका है, I'm already married, लेकिन मेरा भाई जो है ना वो
but my brother is still unmarried or bachelor, and he is sitting just little far away. He is even better than me. He is fair complexioned. तो तुम उसके पास जाओ, तुम I उनसे शादी am करो। dark skinned. अब देखो So यहाँ you पर go to श्रीमद् him and भागवत marry him. चरण में राम जी ने So क्या कहा? अहि what do कुंवारो Ramji said? रघुबर, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। That क्या वो स्वयं my कुंवारा था? younger brother is तो फिर राम जी bachelor, झूठ क्यों बोले? but राम he जी was सत्य not बोलते हैं, unmarried. And जिसको Ramji सत्य दिख is जाता है वो झूठ नहीं truthful. बोलते। Then why is लेकिन राम he जी ने कहा कि lying मेरा भाई कुंवारा है, that मोरा he is a भाई है bachelor? कुंवारा। कारण यही है And the कि reason सामने is जैसा आदमी होता है ना, उसी स्टाइल में बात करनी चाहिए। the we यहाँ should पर भगवान जी reply ने जिस the तरह से person बात in the की, तो manner क्या शूर्पणखा कुंवारी थी? we वो भी शादीशुदा थी, talk. विधवा थी ना। तो विधवा Shupnakha होकर was के कहा कि also मैं a कुंवारी widow, हूँ। but she तो told that शूर्पणखा ने I am जिस unmarried भाव से बात किया, or राम जी ने उसी भाव virgin. से बात किया। Similarly, और Ramji लक्ष्मण replied को कुंवारा to कहने her का दूसरा in भाव this यही way. था And the कि second reason is that 14 साल के लिए जिसने अपनी पत्नी को who त्याग दिया, has अपनी नींद left को his त्याग दिया, अपने wife भोजन को and त्याग दिया, sleep and आज भी food कुंवारा नहीं for था, वो तो 14 मैरिड years, है, then वो तो who is कुंवारा a शादीदार far है। greater bachelor than राम him? जी ने कुछ गलत नहीं कहा, बोले So तुम मेरे Ramji भाई was के not पास lying, जाओ। and he राम जी ने directed कहा her कोई बात नहीं, towards अगर आप हैं Lakshmanji. तो आपके भाई। So she said that no worries, तब if not you, शूर्पणखा then आई I can go to your लक्ष्मण जी के brother. पास, So she came to Lakshmanji और लक्ष्मण जी के पास आकर कहती है and told कि him अब वही डायलॉग यहाँ मारा कि इस the पृथ्वी same पर मैं dialogue अकेली सुंदर हूँ that I am the और most मुझे beautiful मेरी of बराबरी का all, कोई पुरुष नहीं मिला। and I haven't तुम found मुझे सुंदर लग रहे anyone हो, तो equivalent एक काम to करो, my तुम beauty. मेरे साथ विवाह करो। But I feel that you are handsome, so लक्ष्मण जी you ये should बात marry me. सोचे Lakshmanji कि ये thought 13 साल तक अकेला था, तब for तक तो कोई 13 नहीं मिला, years nobody अभी एक came, साल बचा था, तब ये and मुझे मिल just रही है। 1 year is left, and she लक्ष्मण जी is कहते here. हैं कि देखो मुझे क्या Lakshmanji प्रॉब्लम है, told मैं her, खोज ही रहा हूँ, I मेरे have भाई no किसी पत्नी के problem. साथ हैं तो मेरे को भी कोई एक मिल, लेकिन मेरे साथ शादी करोगी तो तुम But मेरे if you घर marry में me, कलंक then you लेकर will आना। be in loss. What did Lakshmanji reply to her? लक्ष्मण जी संबोधन देते हैं, हे सुंदरी He says, सुनो, मैं oh, तुम्हें तुम beautiful दासा। हे सुंदरी lady, तुम सुनो, listen. राम जी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है Ramji कि has मैं sent राम you जी का here. दास हूँ I am the servant और of बड़ा दीन Lord Sri Ram, दरिद्र सुपासा, और मैं दास होने के कारण सदैव उनके अधीन रहता हूँ। and I am स्पेशली always दास कहने का भाव यह है कि मैं servitor राम का of him. सेवक हूँ, विवाह के बाद And तुम्हें भी if सेवक I बनना पड़ेगा, दासी marry बनना you, पड़ेगा। मैं दास then बनूंगी you तो तुम सेवक also बनोगी, will become और दासी the बनकर के servant तुमको of गोबर पर पानी Lord, भरकर लाना पड़ेगा, and you कपड़े will धोना have पड़ेगा, to भोजन पकाना पड़ेगा। do all तो the मैं चाहती menial हूँ, services. So, do दास you होने want to का do दूसरा that? भाव यह है And the second कि जिस reason राम ने तेरे is सामने तक नहीं that देखा, the जिस Lord राम ने who not तेरे even सामने looked at दृष्टि तक you, नहीं की, उस राम का मैं दास हूँ। and जिस I राम ने am the मेरे पास servant विवेक of नहीं किया, तो मेरे such साथ Ramji. तेरी कैसे सफर So, हो सकती है? if he didn't और दास कहने का reciprocate it तीसरा towards you, भाव then how can you expect that कि from me, सुंदरी, his servant? मैं राम का दास हूँ, काम का And दास नहीं हूँ। further, जो he's, काम के it दास होते denotes हैं ना, that वो ऐसा I बात नहीं am the सीखते। servant of Lord Sri Ram and not of lust. सो कुल मिलाकर लक्ष्मण जी ने कहा कि So, तुम मेरे in पास जाओ, totality, Lakshmanji said सेवक that I बनोगी am the तो servant. मेरे You साथ go विवाह to करोगी तो Ramji, दासी बनोगी, because if you राम का marry सेवक me, then you बनोगी will तो तुम become the maid महारानी servant. बनोगी। But if you दासी marry बनना him, चाहती then हो you महारानी, will be the तो queen. महारानी What do बनो। you want to लोग be? मना कर रहे हैं, तो दूसरी She ओर said that लक्ष्मण जी he ने is कहा refusing, कि प्रभु and समर्थ Lakshmanji said कौशलपुर राजा, उनके पिता that he दशरथ is के उनके तीन capable पत्नी है, because his इसका मतलब father ये has नहीं है 3 wives, कितनी भी शादी कर सकते हैं। तो and प्रभु he समर्थ is capable to दशरथ marry more. कौशलपुर के राजा, He is the king जो of कुछ मांगे Kaushalyapuri. वही सब साजा, जो जो चाहे वो कर सकते हैं, तुम उनके पास जाओ।
अब शूर्पणखा आई राम जी के पास, Now Shrupnakha came back to राम Lord जी को Sri हनुमान Ram. जी भेजते हैं, लक्ष्मण जी के पास लक्ष्मण भेजते हैं, राम जी के पास। आपके मन में ऐसा भी होगा कि राम तो So you बहुत might अच्छे be मर्यादा thinking पुरुषोत्तम है, तो फिर Ram बेचारी एक is स्त्री को the क्यों ऐसा यहाँ वहाँ भटका रहे crest हैं? jewel of righteousness, then why is he sending her back कि and एक forth? स्त्री The शादी reason करने is के that लिए आई है, a woman who यहाँ has से come to वहाँ get वहाँ से married, यहाँ करा रहे हैं, he is sending इसका her अर्थ backward. The meaning here राम जी is के सहनशीलता की it परीक्षा ले is रहे हैं। the test of her इसका मतलब क्या tolerance. हुआ कि जिसके साथ शादी करनी हो ना, If you want to marry उसकी someone, परीक्षा लेनी चाहिए, then though और they should be परीक्षा में tested, क्वेश्चन पेपर सबसे पहला कौन सा होना चाहिए? and the question paper सहनशीलता should का। be the हमारे first लिए and foremost will be प्रॉपर्टी क्या है? tolerance. एक गोरी दिखनी चाहिए, For us, गोरा the होना criteria is चाहिए, that दूसरा they पैसे should be वाला होना fair. चाहिए, Second, they तीसरा should be हाइट अच्छा affluent or होना wealthy. चाहिए, Then चौथा third, बाल they अच्छे should have a होने good चाहिए। height and hair. सहनशीलता का तो कोई देखता ही नहीं है। Nobody thinks or लेकिन talks राम about जी the हमें यहाँ tolerance. ये सिखा रहे हैं But Ramji is कि teaching जब us भी here जीवन में किसी का that if वर्ण you करना हो, want to marry someone, ये मित्र मित्रता की बात है, not only एक about the संसार spouses में but even the किसी friends, वंश पोषण etc., करना हो, when you want to associate with किसी का someone, वर्ण करना हो, तो then उनमें you should सबसे पहले check their tolerance. सहनशीलता देखना चाहिए। भक्तों, मैंने मेरे जीवन में जो सीखा है, What I have किसी भी learned in my महान life, व्यक्ति की महानता a उनके great रुपये person's पैसे धन या greatness उनकी is not जाति उनके शरीर से देखकर by नहीं होती। their caste, याद रखिएगा, color, or किसी creed, भी or महान wealth, व्यक्ति की महानता but उनकी his greatness सहनशीलता के ऊपर निर्भर lies होती in है। their tolerance. महान व्यक्ति का मापदंड उनकी That सहनशीलता is होती है। the छोटी छोटी barometer बातों में of क्रोध करे, their छोटी greatness. छोटी बातों में If बुद्धि हो someone जाए, छोटी gets छोटी बातों में angry गुस्सा or करने upset लगे, with ये small, महान small व्यक्ति की issues, पहचान नहीं है। then that is not a sign महान of a व्यक्ति का great हृदय महान, personality. दिल A महान, great उनकी person बुद्धि has महान। a great heart, mind, and soul. सो राम जी अभी आई है शादी करने के लिए, तो उनकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। And Ramji is testing her इस दुनिया tolerance. में So, नारी जो होती है, a वो woman क्षमा और सहनशीलता की मूर्तिमान स्वरूप होती is the epitome of नारी में forgiveness क्षमा and करने का गुण tolerance. और She सहनशीलता has the का quality खूब of होता है, forgiveness और वही and राम जी tolerance. चेक कर That रहे is हैं। what Ramji is ये तो testing बहुत in सुंदर रूप लेकर आई Shurpanakha. थी, She सीता came जी in a very बड़ी beautiful सुंदर का रूप form लेकर, लेकिन as राम a जी वहां beautiful भेज रहे woman. थे लक्ष्मण जी यहाँ वहां, And they बहुत were बुलाया, sending her back and और forth, फिर इससे सहन नहीं हुआ, and she और इसका couldn't जो tolerate it ओरिजिनल further. वास्तविक रूप था, And she वो came in शूर्पणखा her का original प्रकट form हो गया। ये तो थी राक्षसी, because she लेकिन was a बहुत अच्छी स्त्री demon, बनकर आई थी। but she was presenting herself as a कब तक beautiful छुपा woman. कर रखे? But how far कुछ लोग can नाटक she करते हैं, protect? आई एम So, डिवोटी, आई एम सीनियर in डिवोटी, today's अरे world, नाटक कितना चलता है, people pretend that घंटा we are भर जब senior थक जाता devotees. है समझ में आता है, अरे बहुत बड़े डिवोटी, It can लेकिन be, 2-5 दिन उनके साथ रहोगे ना, तब सब ओपन हो जाता है कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं। it can हम देखते हैं ना कंस, not go further. जब So देवकी और it वसुदेव को can go लेकर for गया, 1 or 2 hours, but if you stay with them for 4 5 days, you will देवकी वसुदेव के रथ को get to चलाने know. लगा, लेकिन वो नाटक कब तक रहा? थोड़ी देर के बाद वो रथ लगाम छोड़ दी, देवकी के बाल पकड़े, उसको मारने के लिए And तैयार हो गया। Kans was ब्रज में पूतना आई taking थी, the वो पूतना गोपी का रूप लेकर आई taking थी, लेकिन वो कितनी देर Devaki, तक टिका पाई? but वो वास्तविक रूप in पकड़ वही जाता है जो few समय की minutes देर है। he started तो यहाँ पर pulling ऐसा her ही hair हुआ, and wanted to kill her. शूर्पणखा का Similarly, वास्तविक Putna रूप पकड़ also गया, was presenting और herself as a शूर्पणखा beautiful damsel, कहने लगी and her original कि form मेरे साथ शादी manifested इसलिए नहीं कर sooner. रहा है So, क्योंकि तेरे साथ similarly, स्त्री बैठी है, Shupnakha स्त्री के कारण ही तू मेरे साथ came शादी in नहीं her कर original रहा है, form, and she said that you're not marrying me तो मैं because स्त्री of को मार this दूंगी। woman, so I शूर्पणखा will kill जैसे ही this सीता woman. जी को And मारने गई, as soon as she भगवान wanted रामचंद्र ने to लक्ष्मण को hit इशारा Sita किया, ji, लखन, वो तो धार चलाने वाले Ramji थे, ordered वहां पर Lakshman धार ji, बन चुकी थी, and राम he, जी ने who इशारा was किया, sharpening लक्ष्मण जी his खड़े हुए, arrows, और लक्ष्मण जी ने Lakshman अपना ji हथियार हाथ में लेकर कहा stood up and कि तू स्त्री है, he और said रथ that को you are a देखकर भी woman, किसी ब्राह्मण गाय और स्त्री के and ऊपर हाथ in नहीं उठाया जाता। our
Raghukul or dynasty or clan, nobody attacks a Brahmana, women, or cows. So, to give you a warning, I am just removing or cutting your ears and nose. And she, who was bleeding profusely, she went to her husband, her brother Khardushan, and started shouting at them. She told that, what kind of brother are you? That you are my brother, and yet my ears and nose were cut. So Khardushan said, what happened? And she told that I was there in Panchvati to drink water. But she was not there to drink water, but she was lying. She wanted to get married. And there were two boys, and they cut my ears and nose. And Khardushan became agitated and said, where are they? And Khardushan, along with his 14,000 strong army, started marching towards Ram and Lakshman. But Goswamiji writes that they are following Shupnakha, who don't have ears and nose. So a person who has no ears or nose is an open invitation to death and misery. This is a sign of a failure. And if we see from the philosophical perspective, then these Shrutis are referred to as nose. And a person who doesn't follows the Vedic injunction, that is Shruti or Shastras, they will always get defeated. So Shupnakha pointed towards Rama Lakshman. Khardushan started attacking them. Ramji saw that there is a huge army. Lakshman, he told that you take Sita ji in the cave and I will fight. Lakshmanji said that I will fight along with you. He said that I'm alone sufficient. You take Sita ji to the cave. And Ramji, who has not used his bows and arrows for a long time, he just got ready. He just was checking his bows. And there was such a thunder that it is mentioned in Ramayan that all those 14,000 soldiers, they all became deaf as their eardrums were destroyed. If you go to fight and your eardrums get destroyed, so Khardushan tells that get ready to fight, but their ears are not working. They all climbed the trees. He was saying something else, and they were doing something else. It was such a different situation. Not even a arrow was shot, but just by checking the bow, they lost their ears. And Ramji killed all these 14,000 along with Khardushan. And when he died, she goes to the assembly of Ravan, where this 10-headed Ravana is sitting on his throne. And she
She is a sister, so she was extremely angry and इस कोश के सूर्य told भूषाली him, रावण तुम कर क्या रहे हो "What are you मुझे लगता doing? है तुम्हारा प्रभाव I खत्म हो think चुका है that you have lost ये your तुम्हारे होते हुए मेरी बात courage को and efficiency. You रावण ने are क्या here, दुनिया में and yet my ऐसा कोई ears पैदा नहीं and हुआ nose कि मेरी were बराबरी कर सके मुझसे distracted." बड़ा कोई हो सके Ravan said that nobody is शूर्पणखा there कहती है who रावण is far greater than अपने me. आप को But बड़ा मानता Shurpanakha है said आज that, "Oh जो Ravan, तुम्हारे don't देख consider रहा हूं yourself उसी magnificent. लगता है The person there कि who तुम्हारी I मौत have निश्चित seen, है I इस प्रकार से foresee that शूर्पणखा ने डंका your बजाया death और is अब certain." भूमिका बन रही है So now the रावण के foundation मन में is being बहुत set बड़ा up. संदेह पैदा करवाया शूर्पणखा So ने बहुत कुछ कहा she made Ravan anxious and confused. बात की बात समय आने पर मैं कहूंगा लेकिन एक पॉइंट आज जाते जाते कहना चाहता हूँ Let me add one point शूर्पणखा ने here. बहुत नीतियों की बात की और मेरी ये She हालत हो गई है talked about the मैंने कहा philosophy, बहन चिंता मत करो and आओ तुम महल Ravan में आओ told मैं that, कल "Don't worry, जाकर come to इन my दोनों का room वध करूंगा और and उसको I will यहाँ go there लेकर and आऊंगा kill both of आज them and दूसरे bring दिन that woman here." शूर्पणखा को एक कमरे में रख दिया So सभा he बर्खास्त हुई kept her in the room. रावण The अपने कमरे में गया assembly was concluded. जाकर बेड He पर went लेटा to his room and he is on his bed और रावण बेड पर सोकर सोच क्या and रहा है sleeping. And मैं what दो is बात he छुपा कर बताऊंगा contemplating? आज के Let me सत्संग में show the verses here. रावण की सोच देखो पूरी रामायण में रावण खलनायक रहा In the whole लेकिन रावण Ramayana, के मन की बात Ravan क्या है is रावण की considered बाहर का as the आचरण villain. ठीक नहीं है ये पहली His बात external behavior is not good. लेकिन अंदर Everybody से agrees on रावण that. क्या चीज है But internally, रावण अपने what मन में is क्या सोच रहा Ravana? है ये बात आप What is he thinking and contemplating रावण मन में सोच रहा है is mentioned here. कि खर He is और दूषण thinking that Khar and Dushan मेरे समान ही बलवान है are खर और दूषण मेरे powerful समान ही like बलवान me. थे They were लेकिन similar ऐसे in खर strength, दूषण को भी जिसने मार and दिया yet वो कोई these साधारण Khardushan नहीं were हो killed. सकता है This ये could रावण not सोच be रहा है any ordinary रावण को person नींद नहीं आ रही who है has achieved this feat, and he is sleepless. खर दूषण मोही समबलवंता तिनहि को रई बीनु भगवंता अरे खर और दूषण मेरे समान ही बलवान थे वे जब मर गए He's thinking that Khardushan were similar in strength, and they are dead. So that means that the Lord has manifested on this earth. सुर रंजन भंजन मही भारा सुर रंजन देवताओं को आनंद देने के लिए To give pleasure to the demigods भार को दूर and करने के लिए to lessen the weight of this हो earth, चुका है Lord क्योंकि has खर incarnated दूषण himself. मेरे समान बलवान थे Because वो Khardushan जब were मर similar गए in strength इसका अर्थ ये and होता they है are killed. कि So that भगवान means का अवतार हो चुका the Lord is तो मैं here. जाई बेरी हठी करहूं यदि भगवान का अवतार हो चुका है And if तो he उस has भगवान से incarnated, मैं वैर करूंगा then I will राम ये रावण सोच रहा develop है enmity with him. कि तो मैं जाई This is what बेरी हठी Ravana is मैं हठ thinking करके राम जी or से वैर contemplated. करूंगा और प्रभु सर प्राण तजे भय तजे हूं और वैर करके क्या होगा वो मुझे And मारेंगे by बस मुझे उनके सामने increasing the enmity, then मुझे he छोड़ will दो kill me. And बोले I ऐसा है want to तुमको पता leave चल my गया body कि in कोई his भगवान presence. है तो उससे प्रेम So करो भक्ति करो मरने की if बात you क्यों have कर रहे हो understood that he रावण is ने the क्या Lord, कहा then देखो भक्तों why don't you बोले perform हो यही devotional service भजन towards राम him? रस देहा इस But जन्म में तो माला हो what नहीं does he सकती says that इस in this जन्म में birth तो I भक्ति हो नहीं सकती cannot do तो pure devotional दुख service towards the संयोग Lord से in this रहने birth वाला आदमी because I तामसी live शरीर amongst पाया the तामसी demons शरीर and हो my यही body भजन
is filled with ignorance. देह में भजन नहीं हो सकता, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, लेकिन जो नर रूप भूप सुत को हरि हो नारी जीती रन दो। तो अब मैं क्या करूंगा? वो And तो what will I do? I am sure that He is the Lord, हाथों से मरूंगा, उनके and I want to get killed by Him मुक्ति को प्राप्त and करूंगा। will get लेकिन वो मुझे liberation. मारेंगे कैसे? But how will प्लान He तो ये kill कर रहा है me? ना कि वो मुझे So, this कैसे is what He wants to contemplate and plan. तो वो मेरे जिस How will स्थान He पर kill गए, me? लंका में आकर लंका को पवित्र करे और So, He मुझे should मारे। come to इसके Lanka लिए and purify Lanka हरि and हो kill नारी me. जीत For रन that, दो। what should I do? उनकी पत्नी को हरण I will करूंगा, steal उनकी or पत्नी का abduct अपहरण his करके wife. मैं लंका में लाऊंगा, लंका को पवित्र I will करूंगा, bring her to राम जी Lanka आएंगे and और purify पत्नी Lanka. होगी, और And फिर when मैं he will मोक्ष come, the पाऊंगा। Lanka will be purified and I will ये get रावण को liberation. मन का विचार है। This is और the फिर बाहर से thought रावण ने of जो कुछ Ravana किया, internally. लेकिन बंदा अंदर से Externally, whatever he कि did, भगवान यदि प्रकट हो चुके हैं तब तो मेरे but हाथों से internally he रात भर सोया नहीं, had प्लान the बनाया great प्रभु का plan in his दर्शन mind करने का। और जैसे ही to सुबह get उठा, killed by the Lord. तुरंत मारीच के And पास पहुंचा। immediately in the मेरी morning, कहानी है, he मारीच के went पास to पहुंचा Marich और मारीच को कहा, चलो मारीच and अर्जेंट told, काम है, I चलो have कृष्ण urgent को ढूंढने work चलते हैं। with you. रावण And ने Marich कहा, said that, what do you want me to बताऊं क्या do? है? ये He मैं said तुम्हें that, कल शाम को I will tell बताऊंगा। you that tomorrow 8 हरे o'clock. कृष्णा। Hare Krishna. आप सब भक्तों ने You all have listened with कलाकार नहीं होते हुए mellows. Although my voice was not correct, सुने but रहे, still you all are आप sitting सभी and listening. I'm really grateful to all of you. And I especially want to thank यजमान परिवार, the host family, श्रीमणि लाल, that राम is भाई, the Mani साथ ही Lal, साथ हमारे छगन लाल जी, Chagan Lalji and Babi bin और इनके Prajapati's पूरे family, परिवार, and their सुपुत्र entire family, धर्मिष्ठा Baldev Bhai, माता, Dharmishtha इनके Mata, सुपुत्र प्रकाश, and their son पूजा बहन, रिया, Prakash Pujapin Prihan. आपने ये सुंदर कथा का आयोजन किया You have और इस organized this माध्यम से beautiful katha, हम and by सब और this, सारी जनता all इस of महान us पवित्र are भगवत कथा able को to सुन listen सके। to the glories of Lord Sri भगवान Ram. भगवान का धन्यवाद। So I'm आइए really जय thankful to जयकार के साथ the host family. अपना सत्र So let's conclude this session with Jai Jaikar. श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान